यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं सब लोग आप? स्टूडेंट्स, वी फील regret that class has started a bit late by 5 minutes due to some technical issues, and anyway we'll make it up. So students, how are your studies going? Yes. No, class has started, students. Keshav, class has started. Class has started now. And Suman Goel, you are saying date of class displayed is wrong. Yes, Suman, you are right. Uh, it should be 18th October. It is a probably error on part of tech team. So students, we are doing chapter of risk assessment and internal control, that is chapter 3. And so far we have studied how an auditor identifies and assesses risk of material misstatement by understanding the organization and its environment. He also makes a study of the internal control system operating in the organization, of all its components. So 5 components we had studied. So he makes a study of all the components of internal control, and all these things help him in identifying and assessing risk of material misstatement. So this was, students, largely in context of essay 315, as I had told you in the beginning, at the very outset of this chapter. Now auditor has identified and assessed risk of material misstatement. Now what should be his next logical step? Yes guys, what should be his next logical step? His next logical step is to design and implement responses in the form of procedures to those assessed risks of material misstatements. So therefore we logically come to next essay, essay 330, auditor's responses to assessed risks. Okay, so now today we shall be doing essay 330. So auditor ने risk of material misstatement तो identify कर लिया in accordance with say 335. What should be his response? What should be his procedures? So that is dealt within essay 330. Fine guys. So students, we shall see what does essay 330 deal about. Yes. Yes, guys, are you able to see me? Still, I am getting mails that you are not able to see. Yes, guys, please confirm. Are you able to see and hear me? Please confirm. Rituraj, Karthik, Ashok, are you able to see me live? Yes, students. Yes, Manish. Students are saying that they are not able to see. Yes.
सिर्फ YouTube पे आ रहा है मनीष, ऐप पे नहीं आ रहा। Yes, students, wait for a minute. Tech team is checking that why it is not streaming on BOSF. So, students, tech team is checking why it is not live streaming on BOSF. You are saying that you are able to see it on YouTube, but it is not live streaming on BOSF. Yes, Manish. आपकी डेट उसमें गलत आ रही है मनीष, 18 नवंबर आ रही है उसमें। Yes, guys, wait, keep a patience for few minutes. Wait for few minutes, guys. यस मनीष, अभी टाइम लगेगा क्या आपको? तो क्या यूट्यूब पे वाला कंटिन्यू रहने दें? चलो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट। Yes, guys, there is some problem on BOSF, so you can continue watching it on YouTube. So instead of wasting time, we shall continue it on YouTube. So students, again, I am requesting you to watch it on YouTube because there is some problem in BOSF. So please continue it on YouTube. It is streaming there. Okay. So are you comfortable with that, guys? Would you be able to see on YouTube? Yes. So okay, guys, we are starting. Uh, Meanwhile, the tech team is working on resolving the issue. So the lecture is live streaming on YouTube. So please see it on YouTube instead of on BOSF. Please see it on YouTube. So students,
we were talking about SA 330, auditors' responses to assessed risk. So I'll again recall that SA 315 deals with identifying and assessing risks of material misstatements. Now the auditor has identified and assessed risks. Now the next logical question is what should be his response? What should be his procedures? So that is dealt with in SA 330. So the name of SA is Auditor's Responses to Assessed Risk. जो ऑडिटर ने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे और असेस किए थे, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा उसका. So what should be the auditor's response, students? Response is in the form of designing and implementing procedures. Okay, so designing and implementing procedures. So what are the procedures which auditor adopts and which the auditor performs in accordance with SA 330 in response to assessed risk? So these procedures, students, are of two types. These responses are of two types. One is tests of controls and other are substantive procedures. So students, होगी resolve problem. Yes, students, now the issue has been resolved and you can see it on app also. So there are two kind of responses. One is in the form of tests of control and another is in the form of substantive procedures. So students, पहले भी आप पिछले lectures में भी पूछते रहे हैं. Probably many students, Rahul Sharma, I think, probably today he has not joined in. He was also asking about substantive procedures, कि what are substantive procedures. तो आज हम उस बारे में पढ़ेंगे. So दो टाइप के responses होते हैं students. One is tests of control, another is substantive procedures. And substantive procedures are again divided into two things: tests of details and substantive analytical procedures. And tests of details can be again broken into two parts, that is tests of transactions, which we also call as in ordinary language as vouching, and tests of balances, which we call it in common language as verification. So students, ये जो चार्ट है, ये ओवरव्यू जो है, ये आप अपने माइंड में एस्टेब्लिश कर लें. ये आप अपने माइंड में इसको बिठा लें कि जब ऑडिटर ने रिस्क्स असेस कर लिए, आइडेंटिफाई और असेस कर लिए, उसके बाद उसके रिस्पॉन्सेज दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज in the form of tests of control and another is in the form of substantive procedures. Now substantive procedures are again of two types. One are tests of details and another are substantive analytical procedures. And tests of details can be further divided into two parts. One is tests of transactions or watching and another is tests of balances or you can say verification. So clear guys? So students, first we shall understand what do we mean by these things generally, then we will go to your module. So tests of controls.
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट आर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? Obviously, the tests which are designed and which are performed by the auditor uh, to test operating effectiveness of controls, whether the controls have been designed properly, whether these have operated effectively. So such kind of tests are known as tests of controls. So जो tests कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर करता है उनको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये आप बेसिक चीज समझ लीजिए, ठीक है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऑडिटर डिजाइन भी चेक करता है कंट्रोल्स का, और ये भी वेरीफाई करता है कि कंट्रोल्स उस पीरियड में इफेक्टिवली ऑपरेट करते रहे या नहीं करते रहे। तो बेसिक मीनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का ये है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ second type of procedures are substantive procedures. Substantive procedures का क्या मीनिंग है? Substantive procedures are those procedures which are designed to detect material misstatements at assertion level. तो substantive procedures का पर्पस ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना है assertion लेवल पे। assertion लेवल मींस at the level of account balances, at the level of transactions, say at the level of revenue while checking sales, कोई मिस्टेक तो नहीं है। at the time of purchases, at the time of expenses, at the time of verification of debtors, verification of creditors. These are all substantive procedures. These are all substantive procedures. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में तो ऑडिटर सिर्फ कंट्रोल्स के बारे में टेस्ट कर रहा था कि क्या कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइंड हैं और वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वेदर दीज आर प्रॉपरली डिजाइंड एंड वेदर दीज आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। हाउएवर, substantive procedures are designed to detect material misstatements. Their purpose is to detect the material misstatements, to find out the material misstatements at the level of account balances, at the level of transactions, at the level of disclosures, or you can say at the level of assertions. Okay, students? So substantive procedures are again broken into two parts, that are tests of details and substantive analytical procedures. So tests of details, students, as I've been telling you, these are again of two types, that is tests of transactions and tests of balances. So tests of transaction क्या है? जब आप transactions को verify कर रहे हैं, suppose you are verifying sales of a company, so you are verifying it from the tax invoices, from the sale bills raised by the company. Okay, you are tracing the entry from the in the stock record also, whether stock has been reduced. You are also verifying transporters ability. You are also verifying transporters receipt. You are also verifying say gate outward register. So all these things you are verifying. What you are doing? You are doing tests of transactions. You are basically watching, you are seeing with the help of invoices, or with the help of accompanying vouchers, with the help of accompanying documents, that the transaction has taken place.
and it has been recorded correctly. So it is an example of substantive procedures. Okay, and then the second part of tests of detail is tests of balances. Tests of balances, which we call as verification. अगर कोई आपको किसी अकाउंट बैलेंस के बारे में कुछ आप प्रोसीजर्स कर रहे हैं, लाइक से यू आर सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू ए ट्रेड रिसीवेबल, or you are sending external confirmation request to a trade payable to a creditor, then what you are doing? You are performing verification, you are performing tests of balances. Similarly, say you have physically verified items of PPE, items of fixed assets, then you are gaining satisfaction about existence of those assets. So again, you have performed tests of balances, verification. Okay. So students, आपको टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस ओवरऑल बेसिक समझ में आ गया। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का दूसरा पार्ट है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो व्हाट आर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स? So substantive analytical procedures are procedures, students, when auditor uses analytical procedures as substantive procedures. So he uses analytical procedures to detect material misstatements at the assertion level. Clear? So like students, the auditor is verifying suppose the sales of the company over the past few months, or you can take another example. He is yes, okay, he is verifying sales of the company for the past few months and performing a sort of trend analysis. So what he is doing, he is performing analytical procedures. So when purpose of analytical procedures is to find out material misstatements, then we say that these are substantive analytical procedures. Substantive analytical procedures. Like suppose students, एक आपके मॉड्यूल में भी एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कोई बिल्डिंग है, एक सोसाइटी है सपोज, उसकी यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इनकम, कि उसकी जो लोग रह रहे हैं उसके अपार्टमेंट्स में क्या इनकम है। तो वन वे इज टू वाउच ऑल द एंट्रीज, कि कितना हर महीने कितना पैसा आया अब सोसाइटी के बैंक अकाउंट में, कितने सोसाइटी ने बिल रेज किए। ओके, एंड अनदर वे इज यू कैन फाइंड आउट कि कितने उसके अपार्टमेंट थे और क्या अपार्टमेंट ऑनर्स के साथ क्या एग्रीमेंट था, और अगर सारे अपार्टमेंट्स ऑक्यूपाइड थे सो यू कैन कैलकुलेट कि पूरे साल में कितनी इनकम आनी चाहिए। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सो व्हेन एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूज्ड to find material misstatements in the financial statements, these are called as substantive analytical procedures. Clear students? Basic thing आपको क्लियर है? So आई थिंक स्टूडेंट्स आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि इस पूरे एसए 330 में क्या है। नाउ वी विल गो टू योर मॉड्यूल एंड सी व्हाट इज देयर।
So SA 330, the auditor's responses to assessed risk deal with the auditor's responsibility to design and implement responses. Auditor's responses to assessed risk deal with the auditor's responsibility. Okay. So the purpose क्या है students? SA 330 deals with auditor's responsibility to design and implement responses to risks of material misstatements identified and assessed in accordance with SA 315. तो SA 315 जहां पे खत्म होता है, SA 330 स्टार्ट हो जाता है. ओके. So the objective of auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement through designing and implementing appropriate responses to that risk, those risks. So what is the objective of auditor in accordance with SA 330? Objective of auditor in accordance with SA 330 is to obtain sufficient appropriate evidence about assessed risks of material misstatement. How? By designing and implementing responses to those risks. Okay. So SA 330 states that the auditor shall design and implement all overall responses to address assessed risk of material misstatement at financial statement level, and the auditor shall also design responses to assess risk at the assertion level. So both you have to remember. जैसे कि SA 315 में auditor identifies risks at the financial statement level and also at assertion level. Similarly, SA 330 में उसका response भी it would be at the financial statement level as a whole and in respect of individual assertions, in respect of all the assertions at the assertion level also. Okay, clear? So students, now what about tests of controls? When auditor has to perform tests of controls? तो स्टूडेंट्स ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करने हैं? वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तभी परफॉर्म करेगा जब उसको कंट्रोल्स पे रिलायंस प्लेस करनी है. व्हेन ही इज लाइकली टू प्लेस रिलायंस ऑन कंट्रोल्स. अगर उसको कंट्रोल्स पे रिलायंस ही प्लेस नहीं करनी, ही इज नॉट इंटेंडिंग टू रिलाई अपॉन द कंट्रोल्स, देन व्हाट इज द यूज ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? ओके, सो he would perform tests of controls when he intends to place reliance on controls of the organizations. So the higher the reliance, the more detailed these tests would be, the more extensive these tests of controls would be, and he would also perform tests of controls when he arrives at the conclusion that substantive procedures alone would not be sufficient to provide sufficient appropriate audit evidence at assertion level. Okay, suppose बहुत बड़ी कंपनी है और ऑडिटर सैंपल वेरिफिकेशन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं सपोज उसके मन में डाउट है कि सैंपल जो है इट मे नॉट बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो
Therefore, he would be playing a greater reliance on tests of controls. वो वो ये देखना चाहेगा कि जो कंट्रोल सिस्टम कंपनी ने अपना बना रखा है वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहा है या नहीं कर रहा। वो कंपनी के कंट्रोल सिस्टम पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहेगा। ओके, बिकॉज वाई, because he would be of the opinion that substantive procedures alone are not in a position to provide sufficient appropriate audit evidence at the assertion level. So he would be placing more emphasis on the control system, on the operating effectiveness of controls. Okay. So in designing and performing tests of control, the auditor shall obtain more persuasive audit evidence, the greater the reliance the auditor places on the effectiveness of control. Yes, guys. So this is also very important. So this I've been telling you. So students, जो आपको ये समझना है कि जो ऑडिट ड्यूरिंग ऑडिट के दौरान जो ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है दैट इज परसुएसिव इन नेचर, इट इज नॉट कंक्लूसिव, इट इज परसुएसिव इन नेचर। परसुएसिव का क्या मतलब होता है? परसुएड करना किसी को, टू लीड हिम टू बिलीव, कन्विंस करना। और कंक्लूसिव होता है इररिफ्यूटेबल, जो कि चैलेंज ही नहीं हो सकता। सो द ऑडिटर ऑब्टेन्स परसुएसिव एविडेंस। ओके, सो इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगर ऑडिटर को ज्यादा रिलायंस प्लेस करनी है टेस्ट कंट्रोल सिस्टम्स पे, सो ही टेंड्स टू ऑब्टेन मोर परसुएसिव एविडेंस। जितनी ज्यादा उसको रिलायंस प्लेस करनी है, द मोर परसुएसिव एविडेंस ही ऑब्टेन्स, इट्स डिग्री इंक्रीजेस। ओके, सो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको। ये पॉइंट आपको बेसिक याद रखना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म इन कंडीशंस नंबर 1 when the auditor intends to place reliance on the operating effectiveness of controls, or where he is of the opinion that substantive procedures alone cannot provide sufficient appropriate evidence at the assertion level. Okay, so nature and extent of टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब क्या कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में? तो स्टूडेंट्स कैन यू रिमेंबर कि हमने लास्ट क्लास में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हुए कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे जो कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट है? जैसे अब नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का क्या मतलब है? नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब है किस टाइप के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं, उनका डिजाइन ठीक है या नहीं? हाउ ही वुड डू दैट? सो ही कैन डू दैट बाय से इंक्वायरी, बाय इंस्पेक्शन, by observation, by reperformance. So first he may seek information from the management or from the employees of the organization. Okay,
कि आप बताइए कि ये कंट्रोल कैसे काम कर रहा है, आपका क्या सिस्टम है। सो दिस इज ए प्लेन इंक्वायरी। अनदर इज इंस्पेक्शन, कि आप जो कंपनी ने कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, आप उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, देयर आर मैनुअल्स और देयर आर कोडिफाइड प्रोसीजर्स, so you inspect those, you go through these, simple, you are reading, you are going through these, and you gain an understanding in your mind that how controls have been designed, or how probably these have operated during the year. And another thing is observation. Yes, Suban, you are right. Inquiry, inspection, and observation. So another thing is observation. You are seeing somebody, uh, you are seeing somebody performing a control. Okay, so this is an example of observation. You are observing somebody doing something. Okay, then another type is reperformance. Reperformance is कि जो कंट्रोल कंपनी की तरफ से लगा हुआ है, you are again performing it. You try to verify its effectiveness by performing it again yourself in the way it was designed. Okay, so 4 type of things. So students, in last lecture also I had told you that inquiry alone is not sufficient for this purpose. खाली इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है। आपने किसी से पूछ लिया, कंपनी के एम्प्लॉय से पूछ लिया, या आपकी मैनेजमेंट से डिस्कशन हो गई कि ये हमारा सिस्टम है, तो बात वहीं पे खत्म नहीं हो जाती। इट डजंट एंड देयर, it is just one of the procedures. So we say that inquiry alone is not sufficient for this purpose, for testing of controls. So it may have to be combined together with other things like observation or like reperformance. Okay. So tell me guys, whether inquiry plus inspection plus observation would be better, or inquiry plus reperformance plus inspection would be better. Which of these combinations would be better in performing a test of control? Do not see through your module just by your own common sense. Just by your own common sense. Yes, students. Anyone? Yes, guys. Whether inquiry plus observation would be better, or inquiry plus reperformance would be better. Yes. Any intelligent guesses, guys? Yes, guys. Any intelligent guesses? And why? Why it is so? You have to tell me why it is so. Yes, some responses have come. So guys, inquiry plus reperformance, or you can say inquiry plus inspection plus reperformance, or inquiry plus inspection plus observation. So reperformance coupled with inquiry is always better than observation. Why? What could be the reason?
से स्टूडेंट्स, जब आप किसी को देख रहे हैं कोई काम करते हुए, तो उस टाइम तो वो कंट्रोल चल रहा है, तो आपने उसको देखा सिर्फ, लेकिन जब आप रीपरफॉर्म करते हैं उसको, तो आप खुद उसको, उस मेथड को, उस सिस्टम को रीपरफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इज ऑलवेज ए बेटर प्रोपोजिशन, and and it also gives you satisfaction that the control has operated effectively throughout the period, and not only at that point of time when you saw it happening. Clear, students? That is why we say that inquiry plus reperformance is better than, say, inquiry plus observation. It is not that inquiry plus observation is of no use, or that it is wrong. It is not to be understood in this way. It is to be understood in this manner, that when we talk about comparative advantages of two things, then reperformance coupled with inquiry is definitely better than inquiry plus observation. Okay. So students, like we can also see whether a control has operated effectively during a period by going through the company documentation, by having a look at the company manuals, or say some records of the company, which show that this control had operated effectively during the period. Okay. Say, suppose, students, I go to a bank. I am conducting audit of a bank, and there is a control in the bank. That's a very simple example we can take, that duties are to be rotated, of the bank staff duties are to be rotated, कि कोई भी आदमी एक टाइप का काम अपनी सीट पे से 15 दिन से ज्यादा नहीं करेगा, उसी डिपार्टमेंट, बैंक, उसी ब्रांच के अंदर। सो कंट्रोल तो लगा हुआ है, ये कंट्रोल है, बैंक ने अपना कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, की एक आदमी उस सीट पे ज्यादा टाइम तक ना काम करे। तो अब आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हाउ विल यू वेरीफाई दैट? यू वुड ऑब्वियसली सी, आप कहेंगे कि आप मेरे को ड्यूटी रोटेशन रिकॉर्ड्स दिखाइए, ड्यूटी रोटेशन रजिस्टर दिखाइए, जिससे कि आपको पता चले कि इंप्लॉइज की ड्यूटीज टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं। आप ऑर्डर दिखाइए ब्रांच मैनेजमेंट का, ब्रांच मैनेजर का, कि क्या क्या किस किस टाइम पे ड्यूटीज चेंज हुई हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यू कैन से इंक्वायरी कपल्ड विद इंस्पेक्शन। नाउ आपने इंक्वायर कर लिया कि क्या कंट्रोल है, अब आप उसको, जो मैनेजमेंट का रिकॉर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड है, उससे आप वेरीफाई कर रहे हैं। आप उससे उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कंट्रोल क्या रियलिटी में उस पीरियड के दौरान ठीक तरह से काम कर रहा था या नहीं। क्योंकि आप, यू कैन नॉट गो इन द बैक लाइव। ओके, यू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो back in the time, you cannot go past in the time live. So obviously what has happened, you would try to see it from the records,
from the documents. Okay, so that is an example of inquiry plus inspection. Okay, so clear, students? So the matters the auditor may consider in determining the extent of tests of controls. Now कितना tests of control उसको करना है, उसकी उसका एक्सटेंट कितना होना चाहिए, उसका दायरा कितना बड़ा होना चाहिए, उसके बारे में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, लाइक like the frequency of performance of controls by the entity during the period, the length of the time during the audit period that the auditor is relying on the operating effectiveness of controls, कि ऑडिटर जो है कितने टाइम के बारे में उस कंट्रोल पर रिलायंस प्लेस करना चाहता है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल, कि what is the possibility, what is the probability that control is not likely to work. So deviation means that control would not work as it was desired. Okay, so the relevance and reliability of audit evidence to be obtained regarding the operating effectiveness of control at the assertion level. जो evidence मिल रहा है उसकी क्या relevance है, क्या reliability है, कितना reliable है. So these all things would go in determining the extent of testing the controls. Okay. Timing of tests of controls. ये स्टूडेंट्स टाइमिंग क्या होना चाहिए, टाइमिंग स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि से इन केस ऑफ कंपनी द ऑडिट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ लास्ट ईयर्स ऑडिट. तो अगले साल का हमने ऑडिट प्लानिंग में भी पढ़ा था कि जब एक साल का ऑडिट खत्म होता है तो अगले साल का ऑडिट चालू हो जाता है, उसके साथ ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स चालू हो जाते हैं, अपडेशन होने लगती है. सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टाइमिंग भी और डिफरेंट सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. अगर ऑडिटर ये रिलायंस लेना चाह रहा है कि कंट्रोल्स जो है पूरे पीरियड में इफेक्टिव थे, कोई ऐसी बात है, ओके, सो देन ही वुड रिलाई अपॉन द होल पीरियड. लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही है उसको देखना चाह रहा है तो ही वुड रिलाई अपॉन दोज थिंग्स, लाइक से जब when the auditor is attending physical inventory count of a company, तो जो स्टॉक वेरिफिकेशन के फिजिकल वेरिफिकेशन पे जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं उसका क्या सिस्टम है, तो टाइम देखने हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन पे मैनेजमेंट के क्या कंट्रोल्स हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज हैपनिंग एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट थ्रू आउट द ईयर. सो it would again depend upon what the auditor's purpose is, कि क्या चीज वो वेरीफाई कर रहा है. ओके, so using audit evidence obtained in previous audits, जो प्रीवियस ऑडिट्स में ऑडिटर की जो उसके इनपुट्स हैं, जो फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट इट माइट नीड अपडेशन, कि कंपनी के कोई सर्कमस्टांसिस बदल गए हों, कि वो जो कंट्रोल सिस्टम है जो प्रीवियस ऑडिट में रेलिवेंट था अब वो रेलिवेंट नहीं है. सो दीज थिंग्स वुड बी
seen, and these would need to be updated. If the auditor plans to use some audit evidence used in previous audit, then obviously it needs to be updated in light of current period's requirements. Okay. So these all points are related to this. So evaluating the operating effectiveness of controls. So students, it might so happen that कि ऑडिटर ने जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, व्हेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए, देन ही फाउंड एवरीथिंग ओके, ही फाउंड से नो डेविएशन, एंड ही रीच द कंक्लूजन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. लेकिन जब वो एक्चुअल सब्सटेंटिव चेकिंग कर रहा है तो उसको कुछ मिसस्टेटमेंट्स मिल गई. सो देन ही वुड नीड टू revise his earlier assessment about controls being operating effectively. So अगर स्टूडेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रही हैं, इसका मतलब है कि जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं और जिसका कंक्लूजन आपने निकाला कि दीज आर ऑपरेटिंग सेटिस्फैक्टरली, दिस कंक्लूजन कैन बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रही हैं आपको, इसका मतलब कंट्रोल्स हैव नॉट ऑपरेटेड इफेक्टिवली. Then the auditor may need to revise his procedures, and he may have to revise his assessment that controls were operating effectively, that probably he may have concluded that control risk is low, but this may not be case. Okay, so all these things are interdependent. It is not that you have taken one step and after that you have taken another step, then first step cannot change. It can change. Okay, so when evaluating the operating effectiveness of internal controls, the auditor shall evaluate whether misstatements that have been directed by substantive procedures indicate actions are effective, and reverse of it is also not true. Okay, कि अगर मिस स्टेटमेंट्स नहीं डिटेक्ट होती तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि भाई कंट्रोल्स बिल्कुल ओके हैं. So why? Because it is again due to inherent limitations of controls, because control systems are not perfect. और अगर कोई उसका पहले कंक्लूजन था ऑडिटर का कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरली, लेकिन बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मिसस्टेटमेंट्स निकल आती हैं, सो देन इट इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, देन इट शोज दैट control systems are not performing effectively, that there are deficiencies in internal control. So this we call deficiencies, significant deficiencies. इसके बारे में भी स्टूडेंट्स एक अलग से आप पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या होती हैं. For the time being, you have to understand this only: when a control does not operate as it was intended by the management, it results in significant deficiencies. Significant means major, and deficiencies means shortcomings, kamiyan. Okay. So specific inquiries by auditor when deviations from controls are detected. Specific inquiries by auditor when deviations from controls are detected. So अगर कोई ऑडिटर को डेविएशन मिलती है तो वो
क्या करेगा? He would perform additional tests and he would see that there are greater chances of material misstatements happening. Potential of risk of misstatements becomes greater. So these are the consequences when the auditor notices deviations from controls. Okay. Now we come to substantive procedures. Yes. Substantive procedures. ये स्टूडेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या समझा था हमने? व्हाट वी अंडरस्टूड? Substantive procedures are procedures which detect material misstatements at assertion level, which are designed, which are created to detect material misstatement at assertion level. So these procedures are called substantive procedures. So what does SA 330 say about substantive procedures? It states that irrespective, guys, it is very important, irrespective of risk of material misstatement, that irrespective of risk of material misstatement, substantive procedures have to be performed. तो ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो स्टूडेंट्स परफॉर्म करने ही करने हैं. आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बात आप अपने दिमाग में समझ लीजिए कि irrespective of the risk of material misstatement. Say students, I am auditor of a company and I have concluded that risk of material misstatements in the company is low. Rather, I had concluded that risk of material misstatement is very low. The management is very good. The people are, the management people follow ethical values. They are persons of repute, integrity. The control system is very effective. Okay. So, and there are no related parties. The company's business is also booming. Sales are also increasing on a year-to-year basis. And the company also keeps its records up to date. Its employees are also very much satisfied. So I have concluded that risk of material misstatement in this company is on a lower side. So I suppose I'm giving you an example. I have assumed this, that risk of material misstatement, that risk of errors happening or risks of frauds happening in financial statements of this company is very low. But then do I need to perform substantive procedures? Yes. SA 330 says that irrespective of the risk of material misstatement, कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क जैसा मर्जी हो, चाहे वो लो हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो हाई हो,
जो मर्जी आपने असेस किया हो, लेकिन आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही करने हैं. सो रिमेंबर गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Irrespective of the risk of material misstatement, substantive procedures have to be performed as per SA 330. So auditor cannot skip substantive procedures. Number one. So why it is so, students? Now do not see your modules. आप अपने दिमाग से सोचें और आंसर करें कि ऐसा क्यों लिखा है इसमें, कि एसए 330 में ऐसा क्यों लिखा है कि आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही करने हैं, चाहे आपका रिस्क लो हो, हाई हो, कुछ भी हो. जो भी रिस्क आपने ऑडिटर ने असेस किया, आपको फिर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं. यस. यस गाइस, हैव यू एनी इंटेलिजेंट गेसेस? एनी गेस स्टूडेंट्स यू कैन मेक? क्यों लिखा है ऐसा? व्हाई इट इज रिटन सो that substantive procedures have to be performed? Yes. Yes, Kadambari, to get more clarity, to get better evidence. Yes. ट्रैक आपका ठीक है गाइस. तो आपकी सोचने की लाइन ठीक है. सो क्यों परफॉर्म करने हैं? क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स, जो ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेस किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो ऑडिटर ने असेस किया, दैट इज जजमेंटल. दैट इज जजमेंटल. हो सकता है उसकी जजमेंट ठीक ना हो. एंड अनदर थिंग इज inherent limitations of internal controls, that the controls may not operate as these are intended. Failure of controls. Yes, Suman Goel, you are saying it correctly. So another point is due to the inherent limitations of internal controls. We had understood that there are limitations to controls. There are inherent limitations to controls also. जितना मर्जी आप परफेक्ट सिस्टम बना लें, लेकिन पॉसिबिलिटी या चांस उसमें हमेशा रहेगा कि वो कंट्रोल्स ऐसे काम ना करें जैसे कि डिजायर्ड था, एज इट वाज डिजायर्ड बाय द मैनेजमेंट, एज इट वाज डिजायर्ड बाय द कंपनी. सो these are the two reasons. That the number one reason is that auditor's assessment of risk is always judgmental. It is not perfect. It is always judgmental. मैंने असेस कर लिया कि रिस्क जो है लो है, बट आई मे बी रॉन्ग, because it is based upon a lot of subjective criteria. It involves a lot of judgment. Although my judgment would be professional, but still there is a chance, there is a possibility that I may falter, that it may be wrong. And second thing is due to inherent limitations existing in controls, that controls may fail, that controls may not operate as these are intended, because of the very nature, very design of the controls themselves. Okay. So this is the most important point, guys. और ये आपको अपने दिमाग में
इसको एस्टेब्लिश कर लेना है। ओके, सो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैव टू बी परफॉर्म्ड। सो सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं? We had learned that substantive procedures, I am again writing it. Substantive procedures are, one thing can be tests of details and another is substantive analytical procedures. अब नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रहे हैं अब ये तो बता दिया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने हैं, तो क्या ये दोनों परफॉर्म करने हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या दोनों में से एक परफॉर्म करना है? तो इसके बारे में स्टूडेंट्स एसए 330 कहता है दैट द ऑडिटर मे चूज टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में खाली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ही परफॉर्म कर ले या दोनों का कॉम्बिनेशन परफॉर्म करे। ओके, या टेस्ट ऑफ डिटेल्स करे। तो और टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है? उसमें हमने पढ़ा है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप अपने दिमाग में ओवरव्यू स्टूडेंट्स एस्टेब्लिश कर लें, इतना तो आज आप रिमेंबर करके ही जाएं, इतना तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने दिमाग में लेके ही जाएं। ओके, सो लेट अस क्विकली गो थ्रू योर मॉड्यूल कि उसमें क्या है। सो वही चीज है स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस की है कि वाई सब्सटेंटिव just that because auditor's assessment of risk is judgmental, so may not identify all risk of material misstatement and there are inherent limitations to internal control. So देखिए स्टूडेंट्स, जो आप लॉजिकली आप मेल में रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो इससे ऑलमोस्ट टैली कर रहा है, वो रिकंसाइल हो रहा है इससे, फर्क सिर्फ लैंग्वेज का है। आप में से कई स्टूडेंट्स ने लिखा कि बिकॉज द ऑडिटर नीड्स बेटर एश्योरेंस दैट ही वुड दैट मिस्टेक्स मे स्टिल बी देयर। सो सिर्फ अब आपका लाइन ऑफ थिंकिंग तो ठीक है, उसको थोड़ा सा पेपर में लिखने के लिए आपको उसको रिफाइन करना है कि आपको उसको ऑडिटिंग की लैंग्वेज में लिखना है। यू हैव टू राइट इट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑडिटिंग। सो फर्स्ट स्टेप जो है अंडरस्टैंडिंग का वो आपका ठीक है, अब आपको उसको ऑडिटिंग की लैंग्वेज में लिखना है, जिसके लिए कि आपको अपना मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा और टर्म्स फ्रेजेस रिमेंबर करना सीखना पड़ेगा, रिमेंबर करनी पड़ेंगी, तभी स्टूडेंट्स इस पेपर में आपके मार्क्स आएंगे। ओके, so substantive procedures are audit procedures designed to detect material misstatements at the assertion level. So substantive procedures comprise tests of details and substantive analytical procedures. Clear? So tests of details, तो स्टूडेंट्स एक बार ब्रॉडली हम पढ़ चुके हैं। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर क्लासिफाइड इनटू
tests of transactions, that is watching, and tests of balances verification. Like जैसे कि परचेज, आपने परचेज वेरीफाई कर रहे हैं, आप पार्टी का जो बिल आया सप्लायर इनवॉइस उससे वेरीफाई कर रहे हैं, जो गेट इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री है, या से कोई ट्रांसपोर्ट का प्रूफ है, या किसी भी और चीज से, तो दीज आर एग्जांपल्स रिटन हियर। तो आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का प्रोसीजर है? इट इज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आप क्योंकि बिल से देख रहे हैं बुक्स में कि वो सेम अमाउंट है, सेम डेट पे एंटर है, सेम जिस पार्टी पे जो सप्लायर का नाम है वही नाम से अकाउंट खुला हुआ है, और उसी उसी अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिटेड है। तो इन सब चीजों से क्या पता चलेगा? इन सब चीजों से आपको पता चलेगा कि कोई एरर है या नहीं है। तो इसलिए इसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट material misstatements. Misstatements can occur from error or fraud. आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, लिंकेज, जो आपको राजीव सर ने भी बताया था कि लिंकेज मेथड आपको अडॉप्ट करना है, दैट यू हैव टू अडॉप्ट लिंकेज। आपको एक चीज का दूसरी चीज से लिंक बनाना है। ओके, सो टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। यस गाइस, एम आई ऑडिबल? आप कह रहे हैं कि मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, students, are you able to hear me? So tests of balances consists of verification of assets as well as liabilities. So balances, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस का मतलब है जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, आप ब्रॉडली इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनके जो बैलेंस स्टैंड कर रहे हैं, उनके बारे में जो ऑडिटर टेस्ट करता है उसको टेस्ट ऑफ बैलेंसेस कहते हैं। जैसे कि आप पीपीई बैलेंसेस वेरीफाई कर रहे हैं, आप ट्रेड रिसीवेबल्स कर रहे हैं वेरीफाई, आप कैश एंड बैंक बैलेंसेस कर रहे हैं, आप ट्रेड पेबल्स वेरीफाई कर रहे हैं। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। ओके, so like students, for example, like you are verifying an item of fixed asset, then and you are seeing the documentation of the management, that management has verified items of fixed assets at some frequent intervals during the year. So you are seeing those documents. So what you are seeing, what you are doing is you are performing tests of balances. You are inspecting those documents, which shows you that the management has carried out physical verification of its fixed assets items, of its PPE items at frequent intervals during the year. So this is an example of tests of balances. Okay. So tests of details we have already covered. Tests of details means those tests which relate to tests of transactions. So the transactions which have happened during the year, these relate to those tests, like performing procedures relating to purchases, to sales, to expenses, to other items of income. Okay. And substantive analytical procedures. Now, what are substantive analytical procedures? So students, broadly we had understood
that substantive analytical procedures refer to analytical procedures used as substantive procedures by the auditor. So when analytical procedures are used as substantive procedures, so meaning when analytical procedures are used to detect material misstatements at assertion level, these become substantive analytical procedures. Clear students? This is another way of remembering the things. So when analytical procedures are used as substantive procedures, so in place of substantive procedures, you put the definition of substantive procedures. So when analytical procedures are used to detect material misstatements at assertion level, they become substantive analytical procedures. Because why? Because then their purpose would be to detect material misstatement at the assertion level. Okay. So what are analytical procedures, students? Again, you would be reading about all these things in greater detail in next chapter, chapter 4. So don't be worried about that if you are not able to understand those things completely. For the time being, you can understand that analytical procedures means evaluation of financial information through analysis of relationship among both financial and non-financial data. Say when I am going through some financial data, then I am analyzing it, and I may establish some sort of relationship between various things of financial data which I am analyzing, or I may establish some sort of relationship between financial data and non-financial data. So these all these procedures are called as analytical procedures. Like say I am comparing gross profit ratio of a company for last 3 years, and I have seen that during the year under audit, in third year gross profit ratio has lowered substantially. Say in first year it was 15%, in second year also it was say 15.1, but now suddenly it has come to 10%. Then what I am doing? I am performing analytical procedures. Okay, so I am establishing a trend. I am seeing I am trying to find out a pattern from this trend. So definitely I would try to find out why it is so, why gross profit ratio has fallen suddenly in this year. What has happened? There can be genuine reasons also. There can be manipulations also. There can be undervaluation of inventories done intentionally. Or there can be genuine reasons that gross margin has in fact come down because of the prevailing market conditions. Okay. Yes, plausible means, students, plausible means believable. Plausible means believable. Relationship, plausible relationship. So these are known as substantive analytical procedures. So analytical procedures, I know that you understand now, but what are substantive analytical procedures? So when analytical procedures are used as substantive procedures, so their purpose becomes different. So students, like again I will try to give you another example. Like when we had done risk assessment procedures in this chapter at the very beginning, I had told you that
analytical procedures can be performed as risk assessment procedures. So procedure तो same है. At this stage, at that stage, analytical procedures were performed as risk assessment procedures. Now here, analytical procedures are performed as substantive analytical procedures. Only thing is now their purpose is different. So when analytical procedures were performed, risk assessment procedures, what was their purpose? Their purpose was to identify and assess risk of material misstatement. Now, when analytical procedures are performed, substantive analytical procedures, what is their purpose? Their purpose is here is to detect material misstatement at assertion level, to actually find out. There in the risk assessment procedures, it was only to identify and assess chances of misstatements happening. Now here to find out actual misstatements. So that is the difference. Procedure तो वही है, analytical procedures में there is no change, but the purpose is changed. So in that case, analytical procedures were used as risk assessment procedures. Now analytical procedures are used as substantive procedures. So they become as substantive analytical procedures. They get a new form, as simple as that. Okay. So nature and extent of substantive procedures. So essay 330 student states that depending on the circumstances, the auditor may determine that he shall perform only substantive analytical procedures, and it would be sufficient to reduce the audit risk to an acceptable low level. Students, again, we had learned that auditor has to perform substantive procedures. So substantive procedures में there are two types: tests of details and substantive analytical procedures. Now the auditor may determine that substantive analytical procedures would be sufficient. He may determine so that, or he may determine that only tests of details are appropriate. Okay. Or he may determine that a combination of two is appropriate. A combination of two is a sort of better response, that he would perform tests of detail also and he would perform substantive analytical procedures also. So clear guys, कोई भी combination हो सकता है, but point is that you have to perform substantive procedures. It is not that you must have to perform substantive analytical procedures, and it is not that you must have to perform only tests of details. So any combination could be there. You can be performing both of the things together, or you can be performing both of the things individually. Okay, clear students? So again the same thing, this we have done many times, कि when result of tests of controls are unsatisfactory, the auditor would need to perform more substantive procedures. His area of substantive checking would increase. He would need to perform more of substantive procedures. So ye students, this point is also very important. This guys, this again you have to remember that whenever the results of controls, results of tests of controls are not satisfactory, when the auditor concludes that control risk is high, the results of tests of controls are not satisfactory, then obviously he would increase his area of substantive checking, and in consequence he would have to perform
more of substantive procedures, extent of his substantive procedures would increase. Okay. So this is again the chart जो कि स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था. सो ये आप अपने दिमाग में एस्टेब्लिश कर लें स्टूडेंट्स. और चैप्टर 4 जो है वो सारा इसके आगे चलेगा. इसलिए ये टर्म्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, substantive procedures, tests of details, tests of transactions, tests of balances, substantive analytical procedures, you have to understand them clearly. You have to understand them clearly. Okay. Clear, students? So we shall be taking a short break of 5 minutes, guys, here. So short break of 5 minutes.
ठीक है। So welcome back, guys. So students, we have till now done essay 330 today, which deals with auditors' responses to assessed risks. So I have told you what are tests of controls. I have told you what are substantive procedures, what are and in what further part substantive procedures can be divided. We have discussed about tests of details and substantive analytical procedures and tests of transactions and tests of balances. So now students, we have with us CA Rajiv Sachdeva ji, and he would be talking to you. CA Rajiv Sachdeva ji. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning to you, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, all of you students. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स बताए थे। दो चीजें मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे क्लासेस का। पहला था कि आप नॉलेज बिल्डअप करें, जो और नॉलेज बिल्डअप के जो सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, एक तो स्टडी मटेरियल पे फोकस करें, और सेकेंडली आप क्लासेस को ध्यान से रिलीजियसली सुने। उससे आपका नॉलेज बिल्डअप होएगा ही होएगा। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स जो मैंने फोकस किया था वो था कि आपको साथ साथ नॉलेज बिल्डअप के साथ साथ आपको एग्जाम्स की प्रेपरेशन भी करनी है। एग्जाम्स के लिए आपको अपनी प्रेपरेशन को उस लेवल पे लेके जाना है, उस लेवल पे लेके जाना है जहां पर आप उसे एग्जाम में लिखने के काबिल बनाओ। इसी डायरेक्शन में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे। पहला था स्लो लर्निंग, आराम से स्टडीज के साथ जल्दी ना करें। एक बार आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप होता है कि हम चीजों को अंडरस्टैंड करें, ब्रॉडर व्यू से अंडरस्टैंड करें, नैरोअर व्यू से नहीं, ब्रॉडर व्यू से। जैसे कि सर आपको समझाते हैं, ब्रॉडर व्यू से समझाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे, नॉलेज बिल्डअप हो गया, अब उसे एग्जाम के काबिल बनाना है। उसी डायरेक्शन में मैंने आपको दो पॉइंट्स जो बताए थे वो था, पहला था स्लो लर्निंग। आप 5 टाइम्स रीडिंग, मैंने आपको बताया था, आफ्टर द क्लास इज ओवर इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। 5 टाइम्स रीड कितने स्टूडेंट्स ने 3 डेज तक, मैंने कम से कम बोला था 5 डेज तक भी आप कर सकते हो, ताकि चीजें ABC की तरह आनी शुरू हो जाए। अगर मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेता हूं तो ABC, आपको कोई माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता, ABC आपके माइंड से निकलनी शुरू हो जाती है। क्या आप ऑडिट रिस्क, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था, क्या आप ऑडिट रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं? क्या आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स अभी अगर मैं एक्सटेम्पोर आपसे, क्या आप बता सकते हैं क्या होता है? तो कुछ स्टूडेंट्स तो जिन्होंने क्या इस पे वर्किंग शुरू करी स्टूडेंट्स ने, तो इस पे आप अपने रिस्पॉन्स दीजिए कि क्या इस पे वर्किंग शुरू करी थी या अभी नहीं शुरू करी। ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, ताकि फिर उसी हिसाब से मैं आपको Yes, आगे sir. समझाऊंगा। One student, Priyanka Pandey, is writing. She is building knowledge and 5 times read with consecutive 3 days. और उससे क्या उसको डेफिनेशन पे ग्रिप हो रही है? Yes, Priyanka, are you able to recall the definitions? Sir is asking Priyanka Pandey, are you able to remember the definitions now? What you have learned? और स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्स सर आ रहा है क्या इसमें? Yes, Madhav Tiwari is saying I do read twice. Shivam Gautam is saying slow learning and interrelation of all aspects. हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो लर्निंग मैंने बताया था और लिंकेज मेथड बताया था। तो लिंकेज मेथड जैसे कि शिवम कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है शिवम, आप अगर इंटर रिलेशन करके चीजों को आपस में रिलेट करके अगर पढ़ेंगे
लिंक बना बना के पढ़ेंगे तो चीजें बड़ी आसान लगने लग जाएंगी आपको, और बहुत अच्छा वर्क करती है मेथोडोलॉजी। Yes, Srinivasan is saying, yes, we started working on your points. And Priyanka Pandey is saying, yes, it helps to recall the concepts. वेरी गुड। And Ritu Raj is saying, since the last time CA Rajiv sir addressed us, I have seriously started reading study material line by line and slowly. वेरी गुड, Now, वेरी गुड, and now दैट्स I have एक्सेप्टेबल। completed first ये किसका chapter. आपने And एग्जांपल दिया, कौन बोल रहा है? Ritu Raj, Ritu ऋतुराज, Raj. बेस्ट, दैट्स ग्रेट। यस। और स्टूडेंट सर क्या कह रहे हैं? Shivam Gautam is writing definition of audit risk. ओके। अब मैं आपको थोड़ा टास्क भी साथ में, लिंकेज मेथड और स्लो स्टडी के साथ साथ मैं आपको कुछ टास्क भी देना शुरू करूंगा। 5 डेफिनेशंस ऑन डेली बेसिस आप करें ही करें, टारगेट बना लें कि 5 डेफिनेशन आपको हर रोज करने ही करने हैं। प्लस आप जो सर करा चुके हैं जो टॉपिक्स, आप कम से कम 5 टॉपिक्स का हर रोज 5 डेफिनेशन एंड 5 टॉपिक्स, जो कि ज्यादा नहीं है। 5 टॉपिक्स का मतलब है आपके स्टडी मटेरियल में 3-4 पेजेस बनेंगे, वो आप 5 टाइम्स रीड, या 10 टाइम्स भी करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, आप उसको रीड करके हर रोज चलो। और फॉर कंटिन्यूस 3 डेज, एक दिन नहीं करना, 3 दिन तक करना। तो इस तरह से हमारे साथ साथ जो, एक तो बैकअप तैयार हो जाएगा, और दूसरा हमारे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, अभी सबसे पहले तो टॉपिक्स पे ग्रिप करना बड़ा जरूरी है एग्जामिनेशन में लिखने के, एग्जाम में लिखने के लिए। तो इस डायरेक्शन में मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, जो आप उन टॉपिक्स को करो, और नेक्स्ट लेक्चर में आके मैं आपसे फिर इसकी रिपोर्ट लूंगा कि आपने कितना करा है। पहला है ऑडिट रिस्क डेफिनेशन, मैंने आपको उसी दिन बताया था। सेकंड इज मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब मिस स्टेटमेंट क्या है? मिस स्टेटमेंट नाम से क्लियर है। देखो लिंकेज मेथड में क्या, मिस स्टेटमेंट का मतलब है कुछ गलत हो गया है, इसका मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो यही उसकी डेफिनेशन है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्टेड। मिस स्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्टेड। और बीच में अब आप देखो क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके बीच डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड एंड रिपोर्टेड ऑफ व्हाट? तो इसमें 4 चीजें हैं स्टूडेंट्स: अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दोनों में है। इट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। सो इस तरह से आप देखो, थोड़ा सा थॉट अगर दोगे मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो लिंकेज बना गया मैं उसी समय। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अनदर डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो आप करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपसे ये सारे 10 डेफिनेशन मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज, क्योंकि 5 आप आज करेंगे, 5 आप कल से शुरू करें। और जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं वो और 5 ढूंढ के करें, पहले चैप्टर में से करें, दूसरे चैप्टर में से करें, तीसरे चैप्टर में से, क्योंकि अब काफी काम हो चुका है आपका। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इट इज द रिस्क, तो रिस्क तो है ही, उसके साथ ही लगा हुआ है, दैट द फाइनेंशियल, बहुत इजी डेफिनेशन है देखो, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये डेफिनेशन है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मींस द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रायर टू ऑडिट। ये ऑडिटर जो है ऑडिट से पहले असेस करता है। तो सर ने आपको इसमें डिटेल्ड समझाया है। और थर्ड आप करेंगे इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन आप करिएगा। तो फोर डेफिनेशंस आपके हो गए हैं। और कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन आपने करनी है इसमें। आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर नोटिंग डाउन। इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन, कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन, फिर डिटेक्शन रिस्क की डेफिनेशन, और सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डेफिनेशन इसके साथ ही आपके हो जाते हैं इस चैप्टर के।
तैयार, दो और मैं आपको दे रहा हूं, दो और स्टूडेंट्स आप करिएगा। एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करिएगा आप, और एक एनालिटिकल प्रोसीजर्स की डेफिनेशन आप कर लेना, या ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कोई भी एक कर लेना। तो 10 डेफिनेशन का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज और कल में करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं वो इसको एक बार और भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं है। अगर आपको एबीसी की तरह आनी शुरू हो गई है तो आप और आइडेंटिफाई करके पहले और दूसरे चैप्टर में से कर लेना। लेकिन जो टास्क दे रहा हूं ये होमवर्क आप समझ के चलो, इसको रिलीजियसली करना। इससे आपकी क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम के लिए तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। और अभी ये मत समझना कि एग्जाम दूर है, एग्जाम तो बिल्कुल पास हमेशा समझ के चलना चाहिए। ये एक और व्यू पॉइंट होता है, स्टूडेंट्स को हमेशा लगता रहता है कि एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, आलस करते रहते हैं। तो आपने अपने आप को एकदम से एक्टिव रखना है, और ये समझना है हमेशा कि एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया है। उससे क्या होगा, आपका प्रेपरेशन लेवल और प्रेपरेशन करने का जो अंदाज तरीका है वो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ 5 टॉपिक्स भी दे रहा हूं जो आप उसको रीड करिएगा। एक तो ऑडिट रिस्क, इसी इसी के साथ लिंक्ड आपको टॉपिक्स दूंगा, जो कि पेज नंबर 3.4 आपको कंप्लीट रीड करना है। व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे, अलग से नहीं करना। एमसीक्यू साथ मैं कहता हूं कि आप अगर स्टडी मटेरियल पढ़ोगे अच्छी तरह से तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको फ्री मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। लेकिन प्रोवाइडेड आप स्टडी मटेरियल की जो एक एक लाइन है उसको अच्छी तरह समझ के और 5 बार रीड करके करो। तो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं, एक तो ऑडिट रिस्क है, दिस इज टॉपिक नंबर 1। और रिस्क ऑफ मटेरियल टॉपिक 2, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 10 टॉपिक मैं स्टूडेंट्स आपको दे रहा हूं करने के लिए। आपके पास 2 दिन है आज, आप आज और कल इसको करें, और फिर फ्राइडे में आपको फिर और आगे काम दूंगा। और थर्ड आप टॉपिक करें 3.5 पेज पे, कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट करें। इसमें ये जरूर करना, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में एग्जिस्ट एट 2 लेवल्स, तो वो लेवल्स आप जरूर करना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है और क्वेश्चन भी 3 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। 2 मार्कर क्वेश्चन को भी ध्यान से रख के चलना है आपको। एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं जिसमें करेक्ट या इनकरेक्ट आपको बताना होता है। इनहेरेंट नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे इनहेरेंट रिस्क, तो मैं आपको भी 3 टॉपिक बता चुका हूं। और फोर्थ टॉपिक आप करोगे 3.6 पेज पे इनहेरेंट रिस्क। टॉपिक 5 आप करोगे कंट्रोल रिस्क। टॉपिक 6 डिटेक्शन रिस्क। तो इस तरह से आप रीड करोगे। टॉपिक 7 ऑडिट रिस्क, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। और टॉपिक नंबर 8 असेसमेंट ऑफ रिस्क ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, दिस इज 3.9 पेज। और 3.10 पेज तक स्टूडेंट्स आप आज और कल रीड करो। और जो सर जिस दिन कराते हैं उस दिन वो तो रीड करा ही करो। ये एक्स्ट्रा मैं आपको काम दे रहा हूँ थोड़ा सा ऑडिट का, क्योंकि आप ऑडिट अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे, कम ही पढ़ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा काम अभी से हम तैयारी शुरू करेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो होपफुली सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। मैंने 3 पॉइंट ज्यादा काम नहीं दे रहा, मैं 3.4 पेज से लेके आपको 3.10 पेज तक, 3.10 पेज तक आपको 2 दिन में प्रिपेयर करना है, विद डेफिनेशन और विद टॉपिक्स। और फिर मैं आपसे फ्राइडे को ये पूछने वाला हूं कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। उसको एक दिन पढ़ के नहीं छोड़ना स्टूडेंट्स, कम से कम जो एक दिन पढ़ोगे उसे 3 दिन तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है, रीड करना ही करना है 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स अगर सेकेंड डे ज्यादा लगता है तो आप 3 टाइम्स, फिर हम देखेंगे, उसको असेस करूंगा मैं कि आपका जो टॉपिक है कितना प्रिपेयर हुआ है, क्या आप उसमें लिखने के काबिल एग्जाम में हुआ है या नहीं हुआ, ये साथ साथ हमें एनालाइज करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको काम देता रहूंगा, टास्क देता, होमवर्क है ये आपका। तो आप इसको करते रहिए, आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। बिलीव भी आप बिल्कुल ऑडिटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं, लेकिन तैयारी मेरे साथ साथ करनी होगी आपको। यस सर, आर देयर एनी क्वेरीज आल्सो? सर नॉट टिल नाउ। ओके, तो मैंने स्टूडेंट्स को सर टास्क दे दिया है, तो ठीक आप है भी सर। थोड़ा इनको बीच में एक बार बोल देना कि टास्क जरूर करें, क्योंकि काम ओके। करने से ही होगा।
अब क्या है कि एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी, स्टूडेंट सुन लेते हैं सारी बात, समझ भी लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करते, उसको डिले करते रहते हैं। और ये हो गया था, वो हो गया था, एबीसी बहाने कई होते हैं। लेकिन स्टूडेंट स्टडी के लिए जो आपका मेन काम है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको स्टडी के अलावा और कोई काम नहीं दे रखा, तो आप स्टडी पे कंप्रोमाइज ना करें, इसको नंबर ऑफ आवर्स आप बढ़ाएं, कोई नुकसान नहीं होगा, और खुश होके पढ़ें। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। जो आज पॉइंट्स बताए हैं उसमें ये है कि आप नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ें, और टॉपिक्स भी पढ़ें, और डेफिनेशन का बैकअप भी बनाएं। तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स, और कोई क्वेरीज है तो मैं आपकी आंसर कर दूंगा। फोन नंबर, मोबाइल नंबर मैंने लास्ट लेक्चर में भी शेयर किए थे, आज सर दोबारा दे देंगे, मेरे नंबर लिख देंगे। तो आप कभी भी कोई डाउट हो मेरे से, ये नहीं कि आप, मैं जब लेक्चर में आऊंगा तो ही आपको पूछ रहे हैं, आप फोन करके मुझे पूछ सकते हो, तो भी मैं आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है, कैसे करना है। तो इन द मीन टाइम अगर जो बातें मैं अब बता रहा हूँ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो भी आप मुझे फोन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, विद दिस मैं आपको फ्राइडे को मिलूंगा, और आपसे जो आज मैंने होमवर्क आपको दिया है वो मैं एनालाइज करूंगा कि आपने क्या किया है। यस सर। सर मैं इसको इंग्लिश में समराइज कर देता हूँ कुछ कर दो सर, स्टूडेंट्स। कर दो, कोई नो प्रॉब्लम तो सर। students, I am trying to summarize it in English what Rajiv sir has stated till now. As uh, as he had told you guys in his last address, that you have to take a approach of slow learning, and you have to link one thing with another. You have to establish linkages. You have to remember the definition and understand the topics clearly, and try to read again and again to dispel your confusions. So today he has also given you some definitions to learn and some topics to understand and remember. So as far as definitions are concerned, these definitions relate to audit risk, risk of material misstatements, ये स्टेटमेंट। misstatement, control risk, inherent risk, detection risk, sampling risk, non-sampling risk. रिस्क And besides, he has also requested you to cover all the topics related to this, like what is not included in audit risk. He has asked you to go through this topic, and he has also made clear that that when you do this type of reading, uh, uh, answers to MCQs would automatically follow. You need not uh, have to devote separate time for MCQs when you have a understanding, when you have a good reading from a module after watching this lecture, then then answers to MCQs and objective questions, case study based questions would automatically follow. Okay, so is that fine, guys? Have you now understood what is the motive of sir's address, and what he has conveyed to you, and what he has intended to reach out to you? Yes, guys. Any queries? Yes, guys. Any queries addressed to Rajiv sir? I am again saying any queries which are specifically addressed to Rajiv sir. If you have any, you can send. Otherwise, he has to leave also. ये Yes, स्टूडेंट्स, मैं students, बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दें, yes, जो मैंने समझाया है उसे करने पे जोर दें। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, जहां स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा, अंडरस्टैंडिंग उन्हें होती है, सब्जेक्ट की समझ होती है, दे हैव yes, गुड नॉलेज बिल्डअप आल्सो, बट एग्जाम में रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। व्हाई? बिकॉज प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके नहीं जाते।
जो एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड है। बिकॉज एग्जाम में स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट है जो मेरे तरीके से जो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उससे पढ़ना शुरू करें, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। इसके रिजल्ट्स अपने हैं। आपको भी खुद से ही कॉन्फिडेंस अंदर फील होना शुरू हो जाएगा कि हमारी तैयारी ठीक डायरेक्शन में जाए। आप करना शुरू करेंगे तभी होगा, बिना करे नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जैसे प्रियंका पांडे वगैरह, और जैसे सर ने नाम लिए ऋतुराज, ये जो कर रहे हैं उनको मालूम है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जा रहा है। और ये कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है, प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। ये एक दिन करके छोड़ने, ये रोज करने वाला काम है। आप ये नहीं कि 5 दिन कर लिया और फिर आगे छोड़ दिया, नो नो नो। ये आप डेली करो, डेली एक रिलीजियसली करो, डेली उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और डेली आप उसमें इन्वॉल्व होके करो और खुश होके करो। आप ये नहीं कि ये मेरे सिर पे बोझ पड़ गया और मुझे करना है, तो वो तो फिर उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक बोझ ही, जब आपने स्टडीज को बोझ ही मान लिया, तो फिर आप उसमें आपकी आउटपुट उतनी इफेक्टिव नहीं आती है। इसको खुश होके करना है। बहुत मजा आ रहा है कर करके, वाह आज मैंने इतने डेफिनेशन, बहुत ही मजा आ गया, इतने टॉपिक्स कर लिए, बड़ा अच्छा आनंद आ गया। तो आप थकोगे भी नहीं इससे, आप टायर्ड नहीं फील करोगे, और हमेशा आप, और ज्यादा आपकी आउटपुट आएगी, आप नंबर ऑफ आवर्स भी ज्यादा डिवोट कर पाओगे इससे। तो आप इम्प्लीमेंटेशन करो, जो मैं इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत जोर देता हूँ। जहां स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट रह जाता है इम्प्लीमेंटेशन, तो बातें सारी समझ में आ जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बिना कुछ नहीं होता, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आप तैयारी मेरे साथ करो, सर आपको पढ़ा रहे हैं, तैयारी आप मेरे साथ करो। ये आपके अभी एग्जाम में टाइम भी है, तो आप इसको बेस्ट, टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, टाइम वेस्ट ना करो। तो टाइम तो आपको बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना। तो ये सारी बातें हैं, मैं अभी आपसे ये बातें अभी बंद नहीं करने वाला। ये तो कॉन्टिन्यूस एक एक्सरसाइज है जो मैं करता रहूंगा। जो स्टूडेंट्स जब जाग जाएंगे, जब शुरू करेंगे, तभी सवेरा, वो बोलते हैं ना, जब जागो तभी। तो आप इसको करो, शुरू करो। और नेक्स्ट लेक्चर में आई वांट मोर स्टूडेंट्स कि जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। अभी मैंने कुछ नाम लिए हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट शुरू किया है, तो और भी नाम मुझे चाहिए जिन्होंने इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। और इम्प्लीमेंटेशन से ही बात बनने वाली है। यस सर। Yes, sir is saying, Rajiv sir is saying that implementation is very, very important. So, guys, what is happening is that you are understanding the topic. He is saying that you get to understand the topic, but you are not able to write it in the exams. But and you are not able to convert it in the form of marks in your exams. This is because you are lacking in your implementation. You are not remembering the things. So that is why he is saying that implementation of all what he is saying is very important. And like like in auditing, similarly in other subjects also, you have to follow the same strategy. It is not that you have to remember the things only in auditing and not in law or not in accounts. Obviously, you would have to remember the things, and in say in accountancy, you have to practically solve the questions also. The difference is that only. But the point is, first you have to understand, and then you have to remember. This second stage is missing, guys. सेकेंड स्टेज इज मिसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, तो sir सेकेंड has. स्टेज आप सारा कुछ कर लेते हो, स्टडी मटेरियल भी आप कैजुअली रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि हमने तो लेक्चर अटेंड कर लिए थे, स्टडी रीड कर, उससे होता कुछ भी नहीं है। आप जब तक वो लेवल अपना इंप्रूव नहीं कर, जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ, जो स्ट्रेटजीज दैट आई एम गिविंग टू यू, तो वो आप स्ट्रेटजीज पे जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू करोगे, तब तक बात नहीं बनती। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा, और आपको काम दूंगा, और जो काम आपको दिया है मैंने इस लेक्चर में, उसकी भी रिपोर्ट आपसे लूंगा। जैसे और कोई क्वेरीज हैं सर, तो फिर No, अदरवाइज आप sir. कंटिन्यू कर सकते हैं। Nothing. No queries. ओके ओके सर, ओके। Thank you, sir. Thank you so थैंक यू much. सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। So, guys, I am again repeating Rajiv sir's number. His number is 971803619, and second is 9466789298. So 971803619,
And second number is 9466789298. If you are facing any sort of difficulty, so you can talk to him, you can contact with him. He would be available. In case he is not able to pick up your call, he would call you. Okay, guys. परफेक्ट सर. और लैंडलाइन नंबर सर 01203045 आप लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल पे कॉल, जैसे द वे यू फील कंफर्टेबल आप मेरे से बात कर सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable guidance. Yes, guys. So students, are you ready for some MCQs? Yes, guys, are you ready for some MCQs? Yes, let us see what you have understood, right? Up till now, relating to this chapter. Yes. Yes, MCQs, guys. Which of the following is usually not included? Which of the following is usually not included in risk assessment procedures? Which of the following is usually not included in risk assessment procedures? Yes. So students, the question is कि इन चारों में से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या इंक्लूड नहीं होता, विच इज नॉट इंक्लूडेड. सो स्टूडेंट्स, inspection, we had learned that inspection is part of risk assessment procedures. When you are seeing something, seeing some document, you are inspecting it. So you are by reading something, you are trying to identify probable risks of material misstatements. Okay. Yes, Sarvanshu, Rajiv sir's number is 97180. Again, I am writing here 971803619. Another number is 9466789298. Okay. So which of the following is not included in risk assessment procedure? So inspection is definitely a risk assessment procedure. Similarly, observation is also a risk assessment procedure. When you observe somebody doing something, you can identify risk of material misstatement. Analytical procedures, recently, just now, I had told you that analytical procedures can be used as risk assessment procedures to identify risk of material misstatement by establishing relationships. But re-performance, so is re-performance a risk assessment procedures? No. So students, you can learn it from the very meaning, very definition of risk assessment procedure. What is the purpose of risk assessment procedure? Purpose of risk assessment procedure is to identify risk of material misstatement. So when you re-perform something, you are not identifying, you are actually finding, you are actually detecting that risk of that material misstatement. So that doesn't remain a risk anymore. It has become a material misstatement which you are finding. Okay, so re-performance is not part of risk assessment procedure. So many of you have written correctly, but
Many of you have also given wrong answers. So students, again the definition part comes to play an important role. So if you correctly learn the definition of risk assessment procedures and you try to link it, you would see that purpose of risk assessment procedure is to identify. So the main keyword is to identify and evaluate, not to find, not to actually detect it, not to actually find it. So because when you are actually detecting something, when you are actually finding something, then it becomes a substantive procedure. Okay, clear guys? So method students clear है कि why other options are wrong and this is correct. Okay, and number 2 is which of the following statements is correct. Now you have to state which of the following statements is correct. 4 statements are given relating to internal control. Pretty simple, pretty easy question. Which of the following statements is correct? Yes, question number 2. So which of the following statements is correct? Now it is fairly simple, guys. Internal control is designed, implemented, and maintained by management. This is correct. All 3 are wrong. These all 3 are wrong. Auditor has nothing to do with creation or implementation, and all the remaining 3 are variants of first statement. So this all of you have answered rightly. Not even a single student has answered it wrongly. So it gives me a comfort that at least you have understood so much, that you have understood at least this much, that internal control is designed, implemented, and maintained by management. At least at this level your understanding is clear. Okay, now number 3, a statutory auditor is understanding internal control of a company. Which of the following is not a benefit of such an understanding? A statutory auditor is understanding internal controls of a company. Which of the following is not a benefit of such an understanding? Yes. Third A, help in ascertaining. It has nothing to do with ascertaining income tax liability of the company. Yes, Rituraj, you are right. And others, Prince, Anmol, Vishal Pandey. But these all 3 are benefits of understanding internal control. So now we come to next question, question number 4. Now, little bit tricky, slightly. I won't say totally, but little bit. Which of the following statements is correct? ये स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements is correct? Question number 4. Yes, students, when you are answering,
do write which question you are answering, because the mails are coming after a lag of time. So tell which, also write question number. Which of the following statements is correct? So guys, this question is very simple. Simple understanding and application of a concept that pertains to audit risk. Simple understanding. So what is the answer of this question? Which of the following statements is correct? You have to tell which of the following statements is correct. Yes, so most of you have written answer A. So that is fine enough. That is correct. And Priyanka Pandey, how you are giving wrong answer? Priyanka Pandey, how you are saying that B option is correct? B option is wrong. So students, why all these options are wrong? Inherent risk can be lowered by auditor. I had told you that inherent risk is the company's risk. It is the entity's risk. It cannot be influenced by auditor. So inherent risk तो कंपनी का रिस्क है. It cannot be influenced by the auditor. The auditor can only assess it. So control risk can be similarly, control risk cannot be lowered by the auditor, because this is also company's risk. This is also company's risk or entity's risk. Audit risk belongs to client. So whether audit risk belongs to client? No, it belongs to auditor and can be lowered by. So this is also wrong. So only audit risk can be lowered by the auditor. So again, Priyanka, you have to understand that although inherent risk and control risk are components of audit risk, but what is in the hands of auditor is only detection risk. वो तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क तो कंपनी का है, उसको देखना है, ऑडिटर को असेस करना है. और डिटेक्शन रिस्क वो सोच सकता है कि अगर कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो काम चेकिंग करेगा, और अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो वो सब्सटेंटिव एरिया चेकिंग का बढ़ा देगा डिटेक्शन रिस्क लो रखने के लिए, टू कीप डिटेक्शन रिस्क एट लो. होप प्रियंका यू हैव अंडरस्टूड इट. So students, when you get these type of questions, do study, do understand all the four options. Do study all the four options. Because sometimes it happens that one option is better than another. So you have to mark that option that is the most appropriate. Okay. Now fifth. Which of the following statements is correct? Which of the following statements is correct? Yes, which of the following statements is correct? An increase in control risk would lead to increase in audit risk. An increase in detection risk would lead to decrease in audit risk. An increase in inherent risk would lead to decrease in audit risk, like these. Which of the following statements is correct? Yes. Yes, all of you have written correctly. Varun M, Prince, Vishal Pandey, Meenakshi Tripathi, Parth, Rituraj, Priyanka, Srinivasan, Rito, Manohar Yadav,
Mrs. Nichan Kola, Ruturaj, Vaishali, you have written incorrectly. Vaishali, how you are writing it as B? How? And Rajnandani, again, you are also writing it as B. How B or C? Somebody, Madhav Tiwari, you are also writing it C. How C? And Divya R, you are writing it as D. Say when control risk is increased, when there is increase in control risk, it would obviously increase audit risk. तो अगर आप, if you remember the mathematical equation, audit risk is equal to inherent risk into control risk into detection risk. So if control risk is increased, audit risk would always increase because of this mathematical relation. And if detection risk is increased, option B is, then audit risk would decrease. How it is possible? This is mathematically wrong. Any decrease in any one of the increase in any one of the component cannot lead to decrease in the main thing, in the audit risk. If any component increases, it would have an increasing effect on the audit risk. And C is, an increase in inherent risk would lead to decrease in audit risk. So this is also mathematically wrong. Same. And increase in control risk would lead to decrease in audit risk. This is also same, mathematically wrong. So students who have yes, Girja, your mails are coming. So students, those of you who have given the wrong answer to this question, are you able to understand? Are you able to understand that how you have to answer the questions, that why you were wrong at the first place? It means that you have not understood comprehensively, you have not understood precisely the meaning of audit risk and its components. फिर स्टूडेंट्स एक बार पढ़ लेने से वो चीज समझ नहीं आ जाएगी. दिस यू हैव टू रिमेंबर. And it is where the students fail, and it is where the students fail in the exams and they give wrong answers. So all the students who have given wrong answer to this question, are you able to understand, guys, that why you have given the wrong answer? Is the concept clear to you? So students, Madhav, like the thing you are writing, Madhav Tiwari, it is happening because the definition, the meaning is not still established in your mind. You are reading it very casually. एक बार सुन लिया और देख लिया, काम हो गया. No, you have to remember it. Again, students, unless you remember it, you will not be able to write in the exam, nor you will be able to answer MCQs correctly. So students, have you understood? Yes, you are writing that you have understood. So students, it's already 9:20, so आपकी queries ले लेते हैं. We'll take your queries one by one. Yes.
Yes. Tanuja Rawat. Whether tests of control and substantive analytical procedures are done simultaneously? Obviously, or one after the other. Obviously, Tanuja, if tests of controls, if substantive analytical procedures are performed, they would come afterwards. But it sometimes also happens that the tests of controls are also used to obtain audit evidence regarding assertions. Okay. Sanjana Ben, automated environment topic is not completed. It is not started yet. We would do it in next session or in session afterwards. Yes, Ashok, I think I have given all the summary and repeated. Priyanka Pandey, again you are saying assertions. So assertions, Priyanka Pandey, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं. Assertions you would be studying also in chapter 4. Any, for the time being, you can understand anything which appears in the balance sheet and profit and loss is an assertion by management. मैनेजमेंट उसके बारे में कुछ कह रही है. अगर सेल 5 करोड़ है तो इसका मतलब मैनेजमेंट असर्ट कर रही है सेल 5 करोड़ है. अगर मशीनरी रिपेयर 50 लाख है, इट मींस दैट मैनेजमेंट इज असर्टिंग दैट मशीनरी रिपेयर इज 50 lakhs. अभी आप इतना समझ लें. यस, सुमन गोयल, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन. यस, यू आर राइट. Yes, Srinivasan, you are asking paragraph 7 to 15 is skipped or shall be taken later. Which paragraph you are asking? Srinivasan, page number, please write page number. Nothing is to be skipped. First thing is nothing to be skipped. If it has not been done, then it would be taken afterwards. Nothing is to be skipped. So you can write page number anyway, Srinivasan. You can write page number. Pooja Gupta, you are saying when we go through study material, then yes, topic fixed up in your mind. Yes, that's great, Pooja. Rajesh Kumar V, you are asking to explain re-performance one again. Re-performance means doing something by the auditor again, which was supposed to be done by the staff of the entity, by the staff of the company. Like I had given you example of preparation of bank reconciliation statement. Now management has established a control that accountant of the company has to prepare bank reconciliation statement every month. Now accountant has prepared those bank statements. So the control has operated. Okay, fine. Now the auditor is again preparing bank reconciliation statement of a month on its own. He is himself preparing. So what he is doing? He is re-performing the control which was designed by the management in respect of bank reconciliation statements. So he is re-performing that control. Now it would lead him to believe whether the bank reconciliation statement prepared by the accountant are correct or not, or whether there are errors in it. Yes. Yes, Rajesh Kumar, is it clear to you?
And Manohar Yadav, same. I have given you example of re-performance right now. Gaurav, how auditor would perform control system in the company? Probably you are asking how auditor would test control system in the company. He would test control system by performing tests of controls. Now, what are those tests of controls? Inquiry, inspection, observation, and re-performance. Yes, Shivam Gautam, can we say it is not compulsory to test everything? Auditor only aspect, observe, re-perform those controls which he is suspect of. Yes, obviously he cannot verify all the controls. So he would identify risk of material misstatements and see what are the areas prone to misstatements, and then he can see, he can adopt, he can use his procedures. Yes, Nancy Saxena, you are asking what are procedures? Audit procedures, Nancy, you would be reading in chapter 4. आप प्रोसीजर से समझ सकते हैं जिन जिन चीजों से, जिन मेथड से, थ्रू द मेथड्स बाय विच द ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस. Like you are seeing an invoice, you are seeing a purchase invoice. So what you are doing? You are inspecting it. So inspection is a procedure. So you are, by seeing that, by telling that purchase invoice with the entries in books of accounts, you are getting evidence. You are getting evidence that entries made in books of accounts are correct and proper. So this is an example of procedure. So all the methods, all the ways by which an auditor obtains audit evidence, these are procedures. So we have inspection, we have observation, we have external confirmation requests, we have inquiry, we have re-performance. These are all procedures. The difference is only between categorization. Like some are categorized as, some things in some circumstances are categorized as risk assessment procedures, and the same things in different circumstances are categorized as substantive procedures. Like when say inspection is used to identify risk of material misstatement, it is called as risk assessment procedure. When inspection is used to actually detect material misstatement, to actually dig out, to actually find out the mistake, to actually find out the misstatement, that becomes a substantive procedure. Okay, so clear, Nancy? Yes, Nancy, is it clear? Yes, Gaurav is asking tests of balances. If generators are recorded in books, but actual these are missing. Yes, it means that auditor is not, you are probably talking about a fixed asset, that generator is a fixed asset of that organization. And if it is not missing, if it is missing physically, then it means that auditor is not satisfied of the existence of the generator. Okay, so he would discuss it with the management and see if the amount is material. He would have to see its impact on his opinion. So only say if the generator value is only 50,000. Okay, he has to find out those misstatements which are material. So first he would have to determine his materiality level, जिसके बारे में हम
अगले सेशन में पढ़ेंगे कि हाउ मेटेरियलिटी लेवल इज सेट. So if that thing becomes material, then obviously it would be an example of material misstatement. Okay. And auditor would have to assess its impact on his opinion. Assertion, Gunjan Kumar, I have already explained. Not only twice or thrice, but at least 10 times now. Plausible means believable, reasonable, which can be believed. Yes. Gandhi, Nagbala, Murugan, example for non-financial data. Yes. Non-financial data in context of analytical procedures means like say you, Murugan, you want to verify rent of a company which is appearing in the profit and loss statement as an expenditure. So one possibility before you is to verify all the rent payments, monthly rent payments made. You vouch all the monthly rent payment made with the bills which have been raised by the landlord. And another way is, suppose you read the contract, you read the rent contract and see what is the rent there per square feet, or rent per month in absolute amount, what has been decided. So you can establish a relationship between the rent, between the financial figure with that document. Okay. So this way. Yes, Manohar, again the point I have made clear to you. Yes, guys, any more queries? Yes, students, any more queries? Yes. Any more queries, guys? Shivam Gautam is asking re-performance Hindi में एक time please. Yes. You want me to explain in Hindi? Okay. Re-performance Shivam means किसी चीज को दोबारा करना. जैसे कि एक कंपनी में मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया हुआ है कि अकाउंटेंट जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा मंथली, उसने बनाई भी, तो ये तो एक कंट्रोल है. अब अगर ऑडिटर किसी एक मंथ की बैंक स्टेटमेंट दोबारा उसको बनाता है, दोबारा उसको बनाता है, ये करने के लिए, ये चीज देखने के लिए कि जो अकाउंटेंट ने बीआरएस बनाई थी क्या वो ठीक है या नहीं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ री परफॉर्मेंस. वो एक री परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल है. ओके. Yes, 16.3 is important with exam point of view. So what is 16.3? 16.3, let us see. 16.3. Who is writing this? Parth Rana. Yes. Parth, can you write the page number, please? 16.3. Yes. Using audit evidence obtained in previous audits. Yes. Everything is important from exam point of view. Parth, I can't say that examiner will not ask question, but I am emphasizing those things where questions are more often asked. Okay.
Yes, Prince, is Rajiv sir for audit related queries? Yes, he can guide you generally regarding preparation, exam preparation, but for subject related things, he would answer only queries relating to audit. But generally, you can reach out to him for difficulty in preparation in different subjects, but in a general way. Any query, any specific topic or topic related query that he would answer only in relation to paper 5, that is auditing and ethics. Yes, Anmol will do remaining topics. Yes, we will be doing remaining topics later. There are 2 more lectures left. So 2 main topics are remaining, students. One is automated controls and another is materiality. Okay. Vidya, what is the meaning of plausible relationship? Plausible means believable, reasonable. कि आपने किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए. इट शुड बी बिलीवेबल. कोई उसका मतलब उसका कुछ गलत एनालिसिस, गलत मतलब नहीं होना चाहिए. Yes, Jay Patel, at intermediate level, definitions can be asked and are asked. Last time, I think in last paper, in May 23 exam, it was asked, probably definition of audit risk was asked. And it was also asked to state what is not specifically included in audit risk. It was a complete 4-mark question. Yes, Priyanka Pandey understood. Pooja Gupta, I make mistake. Inquiry and inspection is clear, but about re-performance. Yes, Priyanka, jaise as we go further, like when we will study chapter 4, all your doubts would be cleared automatically, because all these concepts, all these procedures are dragged there, are there also in detail. Okay. Yes, Srinivasan, you are asking about pages 3.52 to 3.67. So what are these pages? Let us see. 3.52. Yes, this we have already done. Yes, automated environment, students, this we still have to do. This part is missing. This we will be doing day after tomorrow or in the next session. So 2 topics are missing: automated environment and materiality. We shall be covering these in remaining lectures. Okay, clear, Srinivasan? Gunjan Devi, how many subjects we should study in one day? That depends upon your capability. Some students are comfortable in reading 2 subjects, but some students are comfortable in reading 1 subject. That depends from person to person. Mansi Gupta, I am joining late classes. I have firstly complete my pending class and notes. I have lack of time. So Mansi, you have to manage. So you have to manage. Somehow you clear your backlog and manage. If you are not able to get up manage, then you can probably pick up few subjects. Okay. Now, Santosh, the greatest book for CA exam is your module. Nothing comes in the paper outside your module. The greatest book in for CA exams is your module.
So looking, searching for another material and waste, it would be just a wastage of time. You can read if you have hobby of reading, or if you want to anyway read from different materials. But CA exam is not that kind of exam in which you have to write from different materials. If you read from your module, that is more than sufficient. Yes, digital audit students, Gaurav, this will be doing as part of automated environment. So again, Vidya, expected rate of deviation from control. This point would become clear to you when we will be doing chapter 4 in sampling. When we shall be doing essay 530, this point would become clear to you. Okay. So that's all for today, guys. Thank you so much for listening to us and giving us a uh, patient listening. Do give your queries. Do post your queries, and if you have any doubts, you can contact Rajiv sir on his phone numbers. Okay. Thank you guys. It is over for today.